Namaste. I welcome you all in our today's live discussion on commercial and other laws, that is Unit 25 of our subject BRBL. आज के लाइव डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज मेक द यूज ऑफ चैट बॉक्स सो दैट वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली। तो जैसे आप सभी को अवगत है, हम जेआईबी और सीआईबी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कराते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक्टिव क्लासेस पे सभी क्लासेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर दीजिए। साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। आज हम बात करेंगे कमर्शियल लॉज के बारे में। कमर्शियल लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम बीइंग अ बैंकर वी शुड नो द इम्पोर्टेंट concepts, important terminologies that are being used on in commercial laws, एंड कमर्शियल लॉज हमारा बैंकिंग एक्टिविटीज को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। So for that, but for going initially we will go for contract. What is the meaning of the contract? क्योंकि जब भी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हम करते हैं, we don't know what is the difference between agreement and contract. So let us see. A contract means an agreement enforceable by law. जो एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से इन्फोर्सेबल है, जो एग्रीमेंट्स के ऊपर मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ, उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट enforceable by law. It is the rights and obligations arising out of the contract which must be enforceable in a court of law. जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पार्टीज को राइट्स एज वेल एज उनकी ड्यूटीज रहती है, वो दोनों चीजें कोर्ट ऑफ लॉ में मीन्स कोर्ट में इन्फोर्सेबल होनी चाहिए, कोर्ट में हम उसको एस्टेब्लिश कर सकने चाहिए। ऑल एग्रीमेंट्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। सभी एग्रीमेंट्स को हम या जो एग्रीमेंट्स अभी जो ये 5 कंडीशंस दी हुई है वो कंप्लीट करेंगे, फुलफिल करेंगे, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट्स बोल सकते हैं। सो लेट अस सी दैट। फर्स्टली, agreement is made by free consent. We will read it first. Made by the competent parties, made for lawful consideration, made with lawful object, and not expressly declared void in the Indian Contract Act. तो जो भी दो या उससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे आके जब एग्रीमेंट करते हैं एंड उस एग्रीमेंट में सभी मेंबर्स ने अपनी कंसेंट फ्रीली दी हुई है, नॉट बाय एनी क्वेश्चन या जबरदस्ती किसी ने अपनी कंसेंट नहीं दी होगी। साथ साथ जो जो व्यक्ति ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। ही शुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट। साथ साथ पर्पस ऑफ दैट एग्रीमेंट जो होगा वो लॉफुल होना चाहिए। इट मस्ट बी फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्रीमेंट्स आर दीज एग्रीमेंट्स विच आर मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड फॉर ए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो हम एग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं वो वॉइड नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 कंडीशंस हम फुलफिल करते हैं तो वो हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। व्हाट आर दिस 5 कंडीशंस? एक तो वो सभी पार्टी के फ्री कंसेंट से होना चाहिए। जो पार्टी एग्रीमेंट साइन करेगी उस पार्टी एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कॉम्पिटेंट टू साइन एन एग्रीमेंट। साथ में जो एग्रीमेंट हम कर रहे हैं वो लॉफुल कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए एंड उसका जो पर्पस है वो भी लॉफुल पर्पस होना चाहिए, एंड वो एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के मुताबिक वॉइड नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए अगर एग्रीमेंट बनाते हैं देन दिस विल नेवर बी ए कॉन्ट्रैक्ट।
सो देयरफॉर एक ये जो 5 या पूरा पैरा जो हमने डिस्कस किया, वी कैन पुट इट इन अ फॉर्मेट that is contract is equal to an agreement plus enforceability. So on that say we can say that ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. सो इसीलिए हम और भी स्टेटमेंट इसमें कर सकते हैं. जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स प्लस एनफोर्सेबिलिटी. इसीलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज जब अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए एग्रीमेंट की जरूरी है. लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट किया है लेकिन अगर उसमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा. इसके लिए हम कहते हैं कि contract is equal to agreement plus enforceability. That is, all contracts are agreement, but all agreements are not necessarily contracts. In a contract, the offer and acceptance must be consensus ad idem. What is the meaning of consensus ad idem? Which means that both the parties must agree on the same thing in the same sense. Therefore, there is no contract without consensus ad idem. So, what is the meaning of consensus ad idem? जो पार्टीज एग्रीमेंट साइन कर रही हैं वो एग्रीमेंट में जो भी टर्म हमने लिखी है सभी पार्टीज वो टर्म को सेम मीनिंग ले रही है, सेम सेंस में समझ रही है, सेम मीनिंग उसका निकाल रही है. तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड जब ये सभी टर्म्स कंसेंसस एड इडम होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट, तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है. कंसेंसस एड इडम मीन्स दोनों पार्टी जो है सेम टर्म को सेम तरह से अंडरस्टैंड करेगी, सेम तरह से समझ लेगी. So in a contract, the offer and acceptance must be consensus ad idem, which means that both the parties must agree on the same thing in the same sense. Very important. So there is no contract without consensus ad idem. There must be a lawful consideration for both the parties to enter into an agreement, and consideration means something in return. कोई भी चीज अगर विदाउट कंसिडरेशन एग्जीक्यूट हो जाती है देन उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता है. So always keep it in mind that for all agreements to become a contract, there must be some lawful consideration. As per Contract Act, consideration means when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done, does or promises to do or abstain from doing something, and such act or abstinence or promise is called for consideration for the promise. It means कि जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है तो एक पार्टी के इच्छा से वे प्रॉमिसर की एक प्रॉमिसर की इच्छा से प्रॉमिसी जो एक्शन ले लेता है दैट एक्शन इज नोन एज ए कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. एंड नॉट नेसेसरीली वो प्रॉमिस टू डू समथिंग. समटाइम्स वो इस तरह से भी बताया जाता है ना कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. सो दैट इज abstain from doing something. So this is also a part of consideration. An agreement without consideration is usually void. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि जो एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है वो वॉइड हो जाता है. इट मींस इट हैज नो लीगल इफेक्ट एंड कैनॉट बी एनफोर्स बाय लॉ. वॉइड का मतलब क्या है? शुरुआत से ही गलत हो गया. विद एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज यूजुअली वॉइड. तो एग्रीमेंट जो कंसिडरेशन के बिना किया जाता है वो शुरुआत से ही वॉइड होता है, अवैध होता है. तो उसको सैंक्टिटी, लीगल सैंक्टिटी कुछ भी नहीं है. इट मीन्स इट हैज नो लीगल इफेक्ट एंड इट कैनॉट बी एनफोर्स बाय लॉ. लेकिन देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस. व्हेन द एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन. अगर कोई एग्रीमेंट हम नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे करते हैं देन वहां कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. बिटवीन द पार्टीज क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. अगर दो पार्टीज एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है इन दैट केस कंसिडरेशन की जरूरी नहीं है. इफ द एग्रीमेंट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड.
कि अगर इस तरह से विदाउट कंसिडरेशन वाला एग्रीमेंट किया भी है एंड अगर उसको रजिस्टर्ड भी करते हैं, इन दैट केस इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन इट कैनॉट बी ए वॉइड एग्रीमेंट. So these are the three terms which are very important from our long questions. Long question में ये पूछ सकते हैं what are an agreement without consideration is usually void, but what are the exceptions available in the for this. तो फर्स्ट एक्सेप्शन इज जब एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन से हो जाता है. सेकंड इज जब ये दो दो पार्टीज या सभी पार्टीज एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रिलेटेड हो, या अगर थर्ड केस अगर एग्रीमेंट राइटिंग में एग्जीक्यूट हुआ है एंड उसको रजिस्ट्रेशन भी किया या उसको रजिस्टर्ड भी किया हुआ है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट. फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड. जब भी जब भी कोई एग्रीमेंट किया जाता है, लास्ट में हमने देखा था देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन दैट वी हैव सीन दैट कंसेंट शुड बी फ्री. so what is the meaning of free consent? Free and genuine consent of the parties to a contract is required. Consent कब free consent माना जाएगा? When it is not caused by coercion, when it is not caused by undue influence, when it is not caused by fraud, when it is not caused by misrepresentation or mistakes, etc. आप ये सेक्शंस एक बार ध्यान में रख दीजिए. रंजन जी, गुड मॉर्निंग. तो समटाइम्स दे मे आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस, तो थोड़ा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ध्यान में रख दीजिए. तो जब भी कोई दो व्यक्ति एग्रीमेंट ये करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड उसमें अगर दोनों पार्टी अपनी जो कंसेंट है वो विदाउट कोर्शन डर के बिना देते हैं या विदाउट एनी उनके ऊपर कोई प्रेशर आके इन्फ्लुएंस आके बिना देते हैं, या उसमें कोई फ्रॉड एंगल इन्वॉल्व नहीं है या गलत रिप्रेजेंटेशन किया नहीं जाता है कोई भी टर्म का, इस तरह से जब कंसेंट दी जाती है इट इज नोन एज अ फ्री कंसेंट. अगेन यहाँ वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्री कंसेंट एक्सेप्शन फ्री कंसेंट कब किया जाएगा, एंड उसमें से ये चार आइटम रहेंगे एंड लास्ट में नन ऑफ दिस रहेगा, देन यू कैन आंसर एज नन ऑफ दिस. They can ask you, you can consider it as free consent as a free and genuine consent if it is given A by coercion, B by undue influence, C by fraud, D none of the above. So your answer will be none of the above in this case. Capacity to contract. The parties to an agreement must be legally competent to enter contract. जो पार्टीज एग्रीमेंट साइन करना चाहती है वो लीगली कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए. So according to section 11, anyone who is a major as per the law, mentally sound and not disqualified by any law is competent to contract. कौन आदमी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट है एज पर लॉ? एक तो जो आदमी मेजर है, जो व्यक्ति मेजर है, मेंटली साउंड है एंड और कोई एक्ट के मुताबिक और कोई लॉ के मुताबिक वो ही इज नॉट क्वालिफाइड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, then in that case that person will be considered as a competent to contract. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड बैंकिंग दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? लेट अस सी. All the banking services and transactions are the effects of the Contract Act. बैंक में आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो वो उसका मेन रूट जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. क्यों? क्योंकि हर इन ऑल ट्रांजैक्शंस वी हैव रिलेशनशिप, वी आर एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द अपोजिट पार्टी, whether they are your depositor, whether you are a lender, I mean they are your borrower, or you are providing any of the services. For all these things, you have a contractual relationship with them. So Contract Act is very important for bankers to understand. Banking is a trust-based relationship. The relationship between banker and customer is a transactional relationship and depends upon the types of transactions. जो मैंने आपको अभी बताया वही.
कि बैंकिंग में बैंकर एंड कस्टमर की जो रिलेशनशिप है वो आपस के रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। मान लो आपने आपका एक्स बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, तो व्हेन यू गो देयर and deposit made money deposit money for fixed deposit, at that time you have a role of, that means you have a relationship of banker and depositor. On the next day, if you go to that bank with that FDR and raise a loan against that FDR, then for repayment of that loan, your relationship is changed with the banker from banker and lender and borrower. So यहाँ transactional relationship हमारा रहता है banker and customer का, and that is the reason it depends upon the transaction. कौन सी तरह के ट्रांजैक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं उसी के ऊपर हमारा रिलेशनशिप डिसाइड हो जाए। तो इट मे बी अ डेटर और क्रेडिटर। जब आप डिपॉजिटर के तौर पे उनके पास जाते हैं तब बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप डेटर क्रेडिटर है। लोन्स के लिए एग्जैक्ट उल्टा, क्रेडिटर डेटर। सेफ कस्टडी के लिए जब कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है तो बेली एंड बेलर, and agent and principal in case of ancillary services like remittances, etc. When we are issuing RTGS, when we are making the payment of RTGS on the instructions of the customer, bank is acting like an agent and customer is our principal. So ये जो relationships हैं, please you keep it in mind, क्योंकि इसके ऊपर आपको definitely question पूछा जा सकता है। डिपॉजिट में बैंकर कस्टमर का क्या रिलेशनशिप है? एडवांसेस में कस्टमर बैंकर का, बैंकर क्रेडिटर का, बैंकर कस्टमर का क्या रिलेशनशिप है? ये चारों रिलेशनशिप्स आप प्लीज ध्यान में रख दीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, पूछा जा सकता है। नाउ वी विल सी समथिंग अबाउट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बारे में आई थिंक आपने जेआईबी में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर विच whole nation which the GST is one indirect tax for the whole nation which was enacted on April 12, 2017 and came into force in India from 8 July 2017. There are two types of taxes that what we have seen is one is direct tax and another is indirect tax. Now there is only one indirect tax in country, that is जीएसटी, जो 12 अप्रैल 2017 को पास हुआ, एनेक्ट हुआ, एंड इफेक्ट कब से हुआ? एनफोर्स इन इंडिया फ्रॉम 8 जुलाई 2017. GST is a single tax on the supply of goods and services, right from the manufacturer to the consumer. पूरे सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर में से उनको एक ही टैक्स पे करना है, दैट इज नोन एज द जीएसटी. And now that is the reason you must be finding that GST is very important in our economy, and in all discussions GST is playing important role. या GST के बारे में जहाँ भी इस तरह से प्लेटफॉर्म पे बात होती है तो GST का नाम हमेशा लिया जाता है, because that is the only indirect tax in the country. Credits of input taxes paid at each stage will be available in the subsequent stages of value addition, which makes GST essentially a tax only on the value addition of each stage. इसका मतलब क्या है कि मान लो मैन्युफैक्चरर ने गुड्स प्रोड्यूस कर दी, उसकी वैल्यू है 1000 रुपीज, उसने उसके ऊपर जीएसटी अगर 10,000 रुपए पे के 10,000 के रुपए के अगर 1,000 रुपया पे कर दिया तो टोटल वैल्यू विल बी 11,000। टोटल वैल्यू विल बी 11,000। जब ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स बेच देगा, ही विल टेक फ्रॉम हिम 11,000 रुपीज, and being 10,000 rupees the cost of the goods and 1,000 GST that is included in that. So he has paid 1,000 GST on that. Subsequently wholesaler जब कोई उसको एडिशन करेगा एंड रिटेलर को मालूम 12,000 को 11,000 पे अगर 5,000 रुपए का एडिशन किया जाता है
तो वैल्यू ऑफ द गुड्स विल बी 10,000 प्लस 5,000 15,000 हो जाएगा। उसके ऊपर 5,000 का उसके ऊपर अगर 10% जीएसटी पे करना है तो ही हैज टू पे 10,000 प्लस 5,000 दैट इज 15,000 के ऊपर अगर 10% पे करना है तो इट विल बी 1,500। बट आउट ऑफ विच because manufacturer has already paid GST on 10,000 that is 1,000 he has to pay only 500 rupees by way of GST. It means जिसका जितना उसने वैल्यू एडिशन किया हुआ है उसी के ऊपर उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। GST of a credit of input tax paid at each stage will be available in the subsequent stages as value addition, which makes GST essentially a tax only on value addition at each stage. ठीक है, now I think you are clear your last sentence. GST, which makes GST essentially a tax only on value addition at each stage. Very important from your exam point of view. The benefit of the benefits to in business and industry includes easy compliances, uniformity of tax rate structure, etc. इसका बेनिफिट क्या है बिजनेसमैन को या इंडस्ट्रीज को? पूरा इंडिया में एक ही टैक्स रेट चलेगा, सो देर इज नो कंफ्यूजन, उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एंड इजी टू कंप्लाई द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑल्सो, because there is only one act prevalent in the country, so easy compliance and uniformity of tax rate and structure. Central government को and state government को क्या benefit है? The benefit to central and state governments are that GST is simple and easy to administer, and there are better controls on leakage, higher revenue efficiency, etc. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को बेनिफिट यही है कि एक तो ये वेरी इजी टू मैनेज, सिंपल टू मैनेज, बिकॉज एक ही टैक्स है यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री, तो इसके लिए गवर्नमेंट के लिए मॉनिटरिंग करना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। प्लस इसमें उन्होंने सही तरह से लीकेज के ऊपर अपने आप कंट्रोल हो जाता है, देर विल नॉट बी एनी रेवेन्यू लीकेज, क्योंकि अगर एक स्टेज में अगर कोई जीएसटी नहीं पे करेगा तो अगले वाले को पे करना पड़ेगा, so there will be better control on leakages, and because of better control on leakages, because it is easy to administer, the revenue efficiency is also high, and इसीलिए अगर आप पेपर में पढ़ते हो month by month जीएसटी कलेक्शन इज कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग ओनली। और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है? इट इज सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स, एक ही टैक्स है, सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स, proportionate to the value of goods and services, and relief in overall tax burden. जीएसटी में हर एक पार्टी को जितनी वैल्यू वो ऐड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज में, उसी के ऊपर उनको टैक्स पे करना है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। उनको प्रीवियस प्रीवियस टाइम द व्हेन दे रिसीव द गुड्स, वहां तक कितना टैक्स पे किया है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको जितना वैल्यू उन्होंने वैल्यू एडिशन किया है, जितने वैल्यू का उन्होंने एडिशन किया है, उसी के ऊपर उनको टैक्स पे करना है। CGST is levied by the central government on intra-state supplies। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल जीएसटी इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल जीएसटी कौन लेविड करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज। विद इन स्टेट सप्लाईज जो है उसके ऊपर सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। एंड वाइल एसजीएसटी स्टेट जीएसटी या यूनियन टेरिटरी जीएसटी इज लेविड बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, and IGST is levied by the center on interstate supply। So अगर विद इन स्टेट सप्लाईज है या इंट्रा स्टेट सप्लाईज है तो CGST लगेगा, एंड अगर इंटर स्टेट सप्लाईज है तो IGST लगेगा। ये अगर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ imports in GST regime। जीएसटी रेजिम स्टार्ट होने के बाद जब इंपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए हाउ इट इज इम्पैक्टेड या हाउ टैक्स इज पेड ऑन दैट।
import of services. Import of services has specifically been defined under Integrated Goods and Services Tax Act, that is IGST Act 2017, कि अगर कोई स्पेसिफिक सर्विसेज हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर आईजीएसटी या जीएसटी किस तरह से लगाना है, इसमें आईजीएसटी एक्ट 2017 में डिस्कशन किया गया है, एंड रेफर्स टू supply of any services where the supplier is located outside India, the recipient located in India, and the place of supply of service in India. Next. अभी तक हमने जनरल टर्म्स का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर ये देख। आईजीएसटी एक बार फिर से बताएं सर। आप प्लीज। IGST, na? IGST is levied by Center on Interstate Supplies. Imports are in GST. Import of services has specifically been defined under Integrated Goods and Service Tax Act IGST. Okay, up to this it's okay. ये जो IGST एक्ट जो है 2017, जीएसटी एक्ट 2017 है, उसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जब किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। एंड व्हाट डज इट रिफर टू सप्लाई एनी ऑफ द सर्विसेज, जब भी कोई इंडिया में कोई सर्विस दे देते हैं वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर वाले सप्लायर जब इंडिया में सर्विसेज दे देते हैं, द रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के जो इंडियन कंज्यूमर्स को जब बाहर के लोग सर्विस दे देते हैं एंड प्लेस ऑफ सर्विस इज इन इंडिया, तो ये आईजीएसटी इंपोर्ट के लिए कब एप्लीकेबल होगा एंड कैसे एप्लीकेबल होगा, उसके लिए मेन कंडीशन क्या है, जो सप्लायर है वो आउटसाइडर होना चाहिए एंड जिसको सर्विस मिलनी है ही शुड बी लोकेटेड इन इंडिया, मीन्स वो इंडिया में उसकी सर्विस प्लेस ऑफ सर्विस जो रिसीव करना है दैट प्लेस ऑफ सर्विस शुड बी इन इंडिया। देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस एक्ट के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने प्रिस्क्राइब किए, दिस विल बी एप्लीकेबल एज पर जीएसटी एक्ट। सर इंटर स्टेट के लिए भी तो आईजीएसटी लगता है ना? हाँ, यस यस, इंटर स्टेट के लिए आईजीएसटी है, सेम थिंग हियर, इंपोर्ट के लिए भी। इंडेमनिटी, अभी नाउ वी आर सीइंग वन मोर एक्ट दैट इज रिगार्डिंग इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडेमनिटी का मीनिंग क्या है, एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या करती है या हमें क्या कहती है, इफ इट इज, मान लो इफ इट इज अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने ले ली, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैं लेता हूं तब इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कहती है कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट का प्रीमियम पे कीजिए। आपने प्रीमियम पे करने के बाद अगर आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट पॉलिसी अगर आप बीमार हो जाते हो सब्जेक्ट टू कंप्लायंसेस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आपका जो मेडिकल का खर्चा होगा, आपका जो लॉस होगा ऑन अकाउंट ऑफ दैट, वो लॉस हम आपको कॉम्पेंसेट करके लेंगे। दैट इज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। मान लो आपने अगर फायर की पॉलिसी ले ली, कोई शॉपकीपर अगर फायर की पॉलिसी लेता है तो उनको क्या कहा जाता है, आप प्रीमियम पे कर दो एंड सर्टेन पीरियड में आपके अगर गोडाउन जिसके ऊपर आपने पॉलिसी ले ली है उस गोडाउन को अगर कोई फायर से आपका नुकसान हो जाएगा तो वो जो लॉस होगा वो हम आपको कॉम्पेंसेट करेंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। Now we will see the definition. A contract of indemnity is a contract by which one party promises to save the other from the loss likely to be caused to him. डेफिनेशन ध्यान में रखने के लिए आपको सिंपल एग्जांपल जो मैंने बोलता, वन पार्टी प्रोमिसेस, इस केस में किसने प्रॉमिस किया है, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी promises to the customer to save the other party. Insurance company promises the customer to save him from loss likely to be caused by fire. इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से ध्यान में रह जाएगी। So what is the contract of indemnity? Contract of indemnity is a contract by which one party promises to save the other from losses likely to be caused to him.
The loss can be either by the conduct of the promisor himself, promisor की खुद के एक्ट की वजह से भी लॉस हो सकता है, और by the conduct of any other person. The promisor is also called the indemnifier. There are basically two parties known as a contract of indemnity. One is indemnifier and second is indemnified. The promisor is also called as an indemnifier. And the essence of contract is indemnity. Is that the essence of contract of indemnity is that the assured must prove a loss. जो indemnified person है, जो प्रॉमिस है, जिसको प्रॉमिस किया गया है, उसने लॉस प्रूव करना है. फायर इंश्योरेंस में जिसको प्रॉमिस दिया गया था कि आपके गोडाउन को अगर फायर हो जाएगा तो वी विल कॉम्पेंसेट यू, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका ड्यू टू दैट फायर दैट मच अमाउंट ऑफ लॉस हैज टेकन प्लेस. So this is very important term to understand, very important term to know from your banking career point of view also. Now, what are the rights of the indemnity holder? The indemnity holder, that is promisee, जिसको promise, जिसने पॉलिसी ले ली है, जो the indemnity holder, that is the promisee or the person who has been indemnified has the following rights against the indemnifier. कौन से उसके rights हैं? Section 125 of the Contract Act entitles the promisee to recover from the promisor or indemnifier all damages, जितना उसका नुकसान हुआ है सभी नुकसान, all damages, costs, sums paid in compromise, and right to sue for specific performance in relation to the matter covered by the promisee to indemnify. उनको खाली खर्चा नहीं मिलेगा, जितना लॉस हुआ उतना नहीं, अगर उनका और भी कोई खर्चा हो जाता है, if he has incurred any other cost or if he has paid any sum इन कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल और देर, उन्होंने अगर कोई कोर्ट केस की होगी तो उसके बारे में अगर कोई खर्चा है, तो ऑल दिस थिंग्स ही कैन रिकवर इट फ्रॉम द प्रॉमिसर हिमसेल्फ. all insurance contracts are all insurance contracts are examples of contracts of indemnity, जो मैंने आपको अभी बताया था. It is very important statement that you should know, you should remember forever. All insurance contracts are examples of contract of indemnity because they are the contracts in which indemnify a person from certain losses which he may suffer. That is, a fire insurance policy, theft, burglary policy, etc., taken by the shopkeeper for his godown. A contract of indemnity may be express or implied depending upon the circumstances of the cases under Section 1. Though one Section 24 of the Indian Contract Act does not seem to cover the case of implied indemnity. Contract of indemnity जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है, इट शुड बी आइदर एक्सप्रेस होनी चाहिए या इम्प्लाइड होनी चाहिए. एक्सप्रेस मीन्स इट शुड बी इन राइटिंग, और कहाँ तो उसका रिकॉर्ड जिक्र होना चाहिए. एंड इम्प्लाइड का मतलब सर्कमस्टेंसेस विल शो that in that particular situation there was a a contract of indemnity was in existence. एंड उन्होंने क्या कहा है, दो सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट does not seem to cover the case of employment. Means these are two contradictory statements. Section 124 में उन्होंने लिखा हुआ है कि it does not seem to cover the contract of in case of implied indemnity. लेकिन as per definition, contract of indemnity may be express or implied. So here आपको just इसको ध्यान में रखना पड़ेगा. And wherever the question comes, you have to ensure that if whether it is express or implied, though it is permitted, even if it is permitted, however, there is a contradictory provision given in Section 124 that Act does not seem to cover the cases of implied indemnity. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा while you have to give the answer in this respect. अभी हमने indemnity देख लिया. Now we will go for contract of guarantee. Contract of guarantee, those who are working in the branches, they are regularly entering into it.
आप बैंक गारंटी कस्टमर को इश्यू करते हैं, दिस इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. In your personal life also, every day we are going or we are entering into a contract of guarantee. मान लो हम एक्स एंड वाई दोनों फ्रेंड्स हैं. वाई wants टू परचेस अ मोबाइल फोन. तो वाई आपको कहता है कि मेरे को मोबाइल फोन परचेस करना है, तो एक्स कहता है ओके, मेरे पहचान के एक शॉपकीपर है, उनके पास हम चले जाते हैं. एक्स एंड वाई दोनों वो शॉपकीपर के पास चले जाते हैं, मोबाइल देखते हैं. तो मोबाइल वाला बोलता है कि यस, व्हाट इज द एक्स को वाई को जो मोबाइल परचेस करना है, कॉस्ट ऑफ दैट मोबाइल फोन इज अराउंड 15,000. लेकिन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वाई को जब वो मोबाइल परचेस करना है, कॉस्ट ऑफ दैट ही इज हैविंग ओनली 10,000 रुपीज विथ हिम. वाई एक्स क्या करेगा? एक्स इमीडिएटली शॉपकीपर को बोल देगा कि सर आप इनको मोबाइल फोन दे दीजिए, ही विल पे यू 5,000 टुमारो. या अदरवाइज वाई अगर शॉपकीपर को बोलता है मैं आपको 5,000 रुपए कल तक ला के देता हूँ, आप क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है ना, मैं तो वाई को पहचानता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको कि बाय टुमारो ही विल पे, आप अभी उसको डिलीवरी दे दीजिए. दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ओनली यहाँ हमने ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ. एक्स ने शॉपकीपर को गारंटी दे दी कि वाई कल तक आपको पे करेगा. अगर वाई कल तक आपको नहीं नहीं पे करता है, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट आई विल मेक यू द पेमेंट. So this is known as a contract of guarantee. It is a contract of guarantee to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of latter default. या थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी इज एक्स, थर्ड पार्टी इज वाई. एक्स ये कहता है कि अगर वाई डिफॉल्ट करता है, तो मैं आपको आपकी लाइबिलिटी है जो है वो पे करूंगा. ए गारंटी में बी आइदर ओरल और रिटर्न. डेली लाइफ में जो हम गारंटी देते हैं वो ओरल रहती है, बट जब कोई हम एग्रीमेंट करके देते हैं तो देन इट विल बी अ रिटर्न गारंटी. जब हम बैंक कोई किसी को लोन देती है, तो हम तो हाउसिंग लोन के टाइम हम बोलते हैं या कार लोन के टाइम बोलते हैं सर हमें कुछ नहीं चाहिए, वी नीड टू गारंटर्स. व्हाट डज दैट गारंटीज आर साइनिंग द एग्रीमेंट, गारंटी एग्रीमेंट. कि अगर बोरोवर उनका लोन टाइमली रीपे नहीं करता है, देन आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अगर वो पेमेंट करने में फेल हो जाता है, आई विल पे योर लोन. तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. The question whether a particular contract of guarantee is a contract of indemnity or guarantee has to be decided by examining the language of the documents entered into between the parties and the nature of the transaction. See, in both the cases that assurance is given, but whether particular transaction is a contract of guarantee और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये जो है, तो जो डॉक्यूमेंट हमने एंटर किया उसमें जो टर्म्स यूज की हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज डिसाइडेड whether it is a contract of indemnity or it is a contract of guarantee. The surety, there are three parties in the contract of guarantee. First is principal debtor, second is creditor, and third is guarantor. So debtor is a person on whose behalf guarantee is being given. That is borrower is the debtor, principal debtor जिसके behalf पे guarantor guarantee देता है. Secured creditor या creditor means bank is the creditor to whom guarantee is being given. And surety is the person who is giving the guarantee. So surety is the person जिसने guarantee दे दी है. So surety cannot stop the creditor. This is very important to remember. Surety cannot stop the creditor. Creditor means lender in banking parlance में. The surety cannot stop the creditor from taking legal action against them on the reason that the principal debtor is insolvent and the creditor may have relief against the principal debtor in some other proceeding. अगर ये कोई पर्टिकुलर केस में जो प्रिंसिपल डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया होगा,
एंड क्रेडिटर जो लेंडर ने है प्रिंसिपल डेटर को इसी तरह के प्रोसीडिंग्स में रिलीफ भी दिया होगा। लेकिन ये होने के बावजूद भी श्योरिटी क्रेडिटर को ये नहीं बोल सकते कि क्योंकि प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हुआ है या आपने दूसरे केसेस में उनको रिलीफ दिया है, इसके लिए इस केस में हमारे अगेंस्ट लीगल एक्शन मत ले लो, इस तरह से वो बता नहीं सकता है, कह नहीं सकता है। In the same way, surety cannot prevent a creditor from enforcing a decree against them and the principal debtor, even if the creditor has not pursued all options against the principal. सो क्रेडिटर ने अगर प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट रिकवरी के सभी ऑप्शंस अगर फॉलो नहीं किए होंगे, कंप्लीट नहीं किए होंगे, एंड अगर वो श्योरिटी के अगेंस्ट अगर डिक्री एग्जीक्यूट करना चाहता है, एनफोर्स करना चाहता है, तो तभी श्योरिटी उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। द श्योरिटी रिमेन्स लायबल The surety remains liable even if the creditor doesn't sue the principal debtor within the limitation period or if the principal debtor is discharged by law. कि अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट लिमिटेशन पीरियड में ही अगर सूट या लीगल प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया होगा, फिर भी श्योरिटी उस ट्रांजैक्शन के लिए लायबल है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी? जैसे अभी तक हमने जो डिस्कशन आपको किया था, मोबाइल फोन का हो या पर्टिकुलर लोन का हो, दैट गारंटी इज गिवन फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। A guarantee which extends to a series of transaction is called continuing guarantee. तो जो गारंटी सिंगल ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन द गारंटी इज इशूड फॉर अ मल्टीपल ट्रांजेक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए जब गारंटी दी जाती है, इट इज नोन एज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। दिस टाइप ऑफ गारंटी इज नॉट लिमिटेड टू ओनली वन ट्रांजेक्शन बट टू मल्टीपल ट्रांजेक्शन, टू मेनी ट्रांजेक्शन। A continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to future transactions by notice to the creditor. कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन में हो, कंटिन्यूइंग गारंटी में अगर श्योरिटी अपनी गारंटी विड्रॉ करना चाहता है, तो वो क्रेडिटर को नोटिस देके कभी भी अपनी गारंटी विड्रॉ कर सकता है। लेकिन वो जो उसका इम्फेक्ट होगा, दैट इज एप्लीकेबल फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। आगे में जो ट्रांजेक्शन्स होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्रीमेंट ऑफ गारंटी, उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं रहेगा। लेकिन इसके पहले जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है, उसके लिए he will be responsible for that. The period for enforcing a claim against the guarantor in a continuing guarantee starts from the date of demand made on the guarantor. जिस दिन क्रेडिटर गारंटर के पास डिमांड रेज करता है, उस दिन से जो क्लेम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सर अभी एक तक, मिनट, पीछे वाली लाइन में ना हाँ ये लिखा ना, द श्योरिटी रिमेन लायबल इवन हाँ, इफ द प्रिंसिपल डेटर या इज दिस डिस्चार्ज्ड वन बाय ना, लॉ। द श्योरिटी रिमेन लायबल सेम वन ना इवन जो इफ, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। हाँ सर, उसके बाद ओके, सेकंड वाली लाइन के साथ अटैच करना है इसको। the श्योरिटी रिमेन surety लायबल remains liable even इवन if इफ, the नीचे creditor वाला, does द not sue the प्रिंसिपल डेटर इज principal डिस्चार्ज। debtor within the limitation period. ओके, कि अगर, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि बैंकर जो है कस्टमर को लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल है, उसी पीरियड में अगर कोई एक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं, इवन इन दैट केस ऑल्सो श्योरिटी लायबल है। दिस इज फर्स्ट पार्ट। और we'll read it again na, or the remains liable even if the principal debtor is discharged by law। अगर कायदे के मुताबिक अगर डिस्चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस अगर प्रिंसिपल डेटर को लॉ ने डिस्चार्ज किया, फिर भी श्योरिटी लायबल रह जाता है वो कैसे लायबल रह जाएगा एज पर लॉ। जब वी डोंट हैव एनी प्रिंसिपल? आर्गुमेंट ऑन दैट ना, दिस इज अ लीगल प्रोविजन, this is as per law।
इट मीन्स क्या है कि उनके बैंक के पास और भी एक सोर्स रिकोर्स दिया हुआ है कि अगर डेटर छूट गया तो भी बैंक इनके अगेंस्ट रिकवर करने के लिए ट्राई कर सकती है. So one more option is given to the creditors. Only we can say in that way. ठीक है ना? So this is especially our online participants. My regular participants, it is just reminder कि we have started means we are conducting online interactive batches जिसमें हम concepts के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कराते हैं. And along with that, we are providing the recorded version of our interactive sessions also, ताकि अगर किसी को रिवीजन करना है तो वो रिवीजन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं. साथ साथ वी प्रोवाइड अ किट कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जैसे आपको अवगत हो, जेआईबी हो या सीआईबी एग्जामिनेशन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितने हम ज्यादा करेंगे उतना हमारी हमारे कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, प्रैक्टिस एंड स्पीड भी बढ़ जाता है, जो हमें हमारे मार्क्स अच्छे स्कोर करने में हेल्प कर सकती है. साथ साथ for CIB participants, we provide case studies also because case studies plays vital role in CIB examination. जितने ज्यादा केस स्टडीज आप सॉल्व करोगे वही प्रैक्टिस आपको एग्जाम में जो आपके केस स्टडीज के ऊपर क्वेश्चंस आ जाएंगे वो सॉल्व करने में हेल्प कर लेगी एंड दिस विल आल्सो ऐड टू योर स्कोर. तो इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन या डिटेल इंफॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. Sufficient necessary link has also been provided. So those who are interested, they can refer that so that they will get the necessary information. And मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, please convey this message to your friends and colleagues so that they can also take the benefit of that. अभी तक आपने जितना डिस्कशन किया हुआ है, नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन दैट. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आंसर के साथ कंफर्टेबल हो तो प्लीज मेक द यूज ऑफ चैट बॉक्स, ताकि आपके एक्शन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकता है. What is the essential requirement for an agreement to be considered as a contract? अगर एग्रीमेंट को एग्रीमेंट को अगर लॉ करके कॉन्ट्रैक्ट करके कंसीडर करना है तो इसेंशियल कंडीशन क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन, रजिस्ट्रेशन बाय लीगल अथॉरिटी, रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन एंड वर्बल कंसेंट. ऑलरेडी हमने 5 फैक्टर्स देखे थे क्या क्या है, एंड वन अमंग देम इज lawful consideration. So A is the correct answer for this question. According to the Contract Act, when is consideration deemed to be present? Consideration present है करके कब माना जाता है? When both parties agree to the term, when both parties exchange goods for equal value, when there is a natural love and affection, when there is a cordial value in the agreement. When कंसिडरेशन डीम टू बी प्रेजेंट कब माना जाएगा? जब दोनों पार्टीज विद नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन रहेगा. व्हेन देयर इज अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज, वी फील दैट देयर इज कंसिडरेशन इज डीम टू बी प्रेजेंट माना जाता है इसको. इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन, इट इज डीम टू बी प्रेजेंट ओवर देयर. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Yes, good to see all are responding. Please. Which condition ensures that there is no contract without mutual agreement on the same term? Free and genuine consent, capacity to contract, lawful object, and consensus ad idem. कौन सी कंडीशन है? Consensus ad idem ensures that there is no contract without mutual agreement on the same terms in the same sense. So D is the correct answer for our question. Ranjan ji, please continue. Who is considered legally competent to enter into a contract according to Section 11 of the Contract Act? Section 11 of the Contract Act के मुताबिक who is किसको हम लीगली कॉम्पिटेंट करके हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए है, एलिजिबल है करके मान सकते हैं. सो पर्सन एनी इंडिविजुअल अबोव द एज ऑफ 16, एनी इंडिविजुअल अबोव द एज ऑफ 19,
any individual who is mentally sound and not disqualified by any law, and any individual who has completed high school. C is the correct answer on the given options. लेकिन यहाँ देखिए C ने भी उन्होंने पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, बट बिकॉज दिस इज द बेस्ट अमंग द गिवन ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बट दिस इज ऑल्सो इनकम्प्लीट ऑप्शन देयर. He should be a major person also. What is the purpose of GST, Goods and Service Tax in India? GST का पर्पस क्या है? To impose multiple taxes, to simplify tax administration, to increase tax rates on consumer goods, to eliminate the need for taxation. क्या पर्पस था जीएसटी का? जीएसटी का पर्पस यही है, among the given options, to simplify tax administration for businessmen. It appears to be the correct answer among the given options. What is the primary benefit of GST for business and industries? Increased tax rates, complex tax structure, easy compliance, and reduced revenue efficiency. So C is the correct answer for question. I think there is no need for me to explain you in detail, क्योंकि हमने डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है. All now let us go for true and false. All agreements are contracts if they meet specific conditions outlined in the Indian Contract Act. What is this? Whether it is true or false? All agreements are contracts if they meet specific conditions outlined in the contract. So already हमने कहा है कि all contracts are agreement if they meet specific conditions outlined in the contract, but not all agreements are necessary contracts. They have given only half of the statement. All agreements are contract. All agreements are contract if they meet specific conditions outlined in the contract. But even if you write here true, there is no issue on that. Because if we see the statement given to us in the question, only half part of the question is given. So we should write all agreements are contract is not the correct. Sorry, all agreements are contracts. All contracts are agreements if they meet the specific condition outlined in the Indian contract. So this statement is not a correct statement. Answer is false for this. Let us see. Nobody has given answer for question 6. Okay. Okay. See, here the statement is wrong. Here the word contract should be there. All contracts are agreements if they meet specific conditions outlines in the Contract Act. But not all agreements are necessarily contract. Correct hai. Our answer should be false for this statement. Absolutely right. Consent in a contract is considered free and genuine if it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake. Consent of contract is not considered as a free and genuine if it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake. So our answer is false for this statement. Anyone who is mentally sound and not disqualified by any law can enter into a contract according to the Indian Contract Act. This is the correct statement. Our answer is true for this. CGST is levied by state government on intra-state supplies. No, CGST is levied by central government on intra-state supply. CGST is levied by central government on intra-state supplies, while SGST and UTGST is levied by the state and union territory. Next question. What is the essence of any contract of indemnity? Contract of indemnity के लिए essential function, essential feature क्या है? The indemnifier must prove a loss. The promisee promises to save the indemnifier.
The indemnifier promises to save the promisee from the losses, and the promisee indemnifies the indemnifier. C is the correct answer for this question. According to Section 128 of the Indian Contract Act, what is the extent of surety liability? Section 128 of Indian Contract Act के मुताबिक surety की liability कितनी है? It is limited to half of the principal debtor's liability. It is coextensive with that of the principal debtor. It is limited to a fixed amount agreed upon in the contract. It is non-existent. It is co-extensive with that of the principal debtor. जितनी principal debtor की है उतनी liability surety की भी है. So B is the correct answer for this question. What type of guarantee extends to a series of transaction? अगर कोई पार्टी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स करनी चाहती है तो वो कौन से टाइप की गारंटी इश्यू करते हैं? फिक्स गारंटी, वन टाइम गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी और लिमिटेड गारंटी. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Which party in a contract of guarantee is known as the principal debtor? Already डिटेल में आपसे डिस्कशन किया हुआ है. Contract of guarantee में principal debtor कौन है? Person who provides the guarantee, person for whom the guarantee is provided, person receiving the guarantee, and person releasing the guarantee. The person for whom the guarantee is provided is known as the principal debtor. B is the correct answer. We have already discussed in detail about this. What is the period of enforcing a claim against the guarantor in a continuing guarantee? Yeah. What is the period? जब कंटिन्यूइंग गारंटी में गारंटर के अगेंस्ट कब माना जाता है कि उसका एनफोर्समेंट पीरियड स्टार्ट हुआ? Starts from the date of the guarantor's notice of revocation, starts from the date of initial transaction, starts from the date of demand made on the guarantor, and starts from the date of the last transaction covered by the guarantor. जिस दिन गारंटी के ऊपर डिमांड किया जाता है उस दिन से एनफोर्समेंट क्लेम स्टार्ट हो जाता है. पीरियड फॉर एनफोर्समेंट क्लेम स्टार्ट हो जाता है. सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. Under what circumstances can a surety revoke a continuing guarantee? कौन से circumstances में surety guarantee revoke कर सकते हैं? At any time without notice to the creditor, only after principal debtor has deposited, by providing notice to the creditor for future transactions, by obtaining consent from the principal debtor. C is the correct answer for this. Now let us start for true and false. All insurance contracts are examples of contract of indemnity because they indemnify a person from certain losses. Yes, this is the correct statement. Section 125 of the Indian Contract Act entitles the indemnity holder to recover only damages from the indemnifier in relation to the matter covered by the promise to indemnify. हमने क्या देखा था? Not only damages, but the cost and other so many factors are also included in that. So this statement is not a true statement. As per Section 125 of the Indian Contract Act, entities that promisee Act entitles the promisee to recover from the promisor or indemnifier all damages, costs, sum paid in compromise, and a right to sue for specific performance in relation to the matter covered by the promise. The liability of the surety. The liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor unless the contract provides otherwise. This is the correct statement in last slide we have discussed. A continuing guarantee can be revoked by the surety only for past transactions, not for future transactions. गलत statement है.
उल्टा स्टेटमेंट दिया हुआ है उन्होंने. करेक्ट स्टेटमेंट इज कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड बाय श्योरिटी ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस एंड नॉट फॉर पास्ट ट्रांजैक्शंस. So the answer is false for this statement. तो विद दिस अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्रेस दिस लाइक बटन, बिकॉज दिस विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. आपकी यही एक्टिविटी मेरे लिए अलग अलग वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो आप ये इंफॉर्मेशन प्लीज आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं. आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगी, जो आपको, जिसकी वजह से आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस आउट नहीं करेंगे. अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लासेस देखते हो एंड आपको अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो प्लीज आपका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे हमें कन्वे कीजिए. Definitely we will respond it positively. With this, we will conclude our discussion for a day, and thank you very much.